So, hello everyone, welcome to this new thing which I'm doing, which would be building in public live. Basically, so many people says now that AI can make money or we made XYZ. So, yes, figuring it out. I was saying कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AI है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरी जॉब खा जाएगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पूरा बिजनेस खा जाएगा. तो कल रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था कि व्हाट शुड आई डू टू बेसिकली navigate in this market. And as everyone, I also had like fears, fear of people being people judging me or things like that, and so many other people might also have it. So hence, like, as in 2018 I did a challenge on YouTube where I was shooting one video every day, editing it the same day, and uploading it also the same day. So I just thought, like, let me go for that. So I decided, okay, I'm gonna start this live stream which will be AI and Piyush, and we will be building a business, or let's say whatever the business I have been building, I would be working on my business in public, and I will talk along like what I'm doing and how I'm doing, and however it goes. And along the way, so many of you might also be trying to get out of the same position as I described. करेंगे कि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ बिजनेस वगैरह जो चल रहा है, उसी के अंदर मैं कुछ कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, मतलब तो उसी के अंदर मैं कंटिन्यू करूँगा काम करना. तो चालू करते हैं. आई थिंक द लाइव स्ट्रीम इज़ गोइंग गुड एंड आई कैन शेयर द switch my screen and okay. Say find some more ideas related to, let's say, this agent breach approach. Find more stories and different framework. अभी ये भी लिखने का ज़रूरत है नहीं वैसे, बट मैंने खुद नॉर्मली बात करता हूँ, मैं वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ. नाउ इट इज़ गिविंग मी फॉर्मेट ऑप्शंस. इधर इट कैन बी अ मिथ बस्टर जिसके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक किया जाता है. दूसरा हो गया कि फ्रेमवर्क हाउ टू, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है. एक ओपिनियन बेस्ड है कि जिसमें अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो उसके रिलेटेड, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ मार्केट में थॉट चल रहा है तो उसके रिलेटेड चलता है. और ये लिस्ट रैपिड फायर है. इट इज़ 3 things to frontier. It is a step by step or 4-5 point kind of post. It is like quick post, quick scannable, so shorter one. For this one, let's say a framework or how to. Now it is using my voice and persona files, understanding like how I would approach it based on just few clicks and selection, and it has drafted this particular entire post with like hashtags and all. Now what I'll just do is like I'll just use this word visualize. Now it is using my visualization skill, basically another kind of agentic skill I have given, how to think for the concepts for any of my posts. Now it is asking like it has given 3 options: guard, dog off leash, diagram or sandbox that leaked, split frame, same key and 2 doors. Let's say this one. Now it will ask me like, do I want a video clip or a still image? I'll say still image. Now it will ask me permission to use my browser, and I can just give this bypass permission so it stops asking me. This tab particularly is Claude Code is using right now. It has opened up a custom Gemini which I built previously for this project. It will verify if it is on the correct one. It is using correct Gemini version, and then it will do its thing, write the prompt, submit for the image. So Claude Code is using Gemini for the same project, and I have configured it that way.
Likewise, I can also ask a use ChatGPT, and it can do the similar thing in the ChatGPT environment. So basically, I'm not paying any extra for API usage for this kind of smaller one-on-one generations and all. And I was also trying to figure out a way everybody can set it up with whatever their existing tool set are there, you know. So Gemini sometimes takes a little bit longer. और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जेमिनाई को पता चल गया कि ये क्लाउड कोड यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो इमेज देने में बहुत ही ऐसे डिले करता रहता है। मैं ऐसा ना एक नए टैब में जेमिनाई ओपन कर देता हूँ एंड उसकी लाइब्रेरीज में अपन चेक करते हैं कि क्या इट हैज़ जनरेटेड दिस अनलीश्ड डॉग इन अ डेटा सर्वर रूम एंड साउंड्स गुड। I can just say go ahead and download this one, or what I can do easily is I can just download it for them. So currently what it is doing is it is giving me multiple options. अगर एक इमेज से ऐसे वो ऑटोमेटिकली 2-3 ऑप्शंस वगैरह बना लेता है, और अभी मैंने इसको बोला बीच में कि गो अहेड एंड डाउनलोड दिस वन, तो अभी ये यूज़ कर रहा है ब्राउज़र। फिर उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हवरिंग पे डाउनलोड का बटन होता है, और फिर वो क्लिक करें और ये अपन सेव कर लेंगे। मैं कभी कभी सेव करके भी उसको बता देता हूँ कि भाई डाउनलोड के फोल्डर में फ़ाइल पड़ी है, अगर मैं कोई कस्टमर क्लिक वगैरह, तो मैंने उसे लेट्स सी इट इज़ रनिंग अ स्क्रिप्ट, उनका टैग होता है वो अभी डाउनलोड इन मेटा डेटा स्क्रिप्ट। नाउ इट विल कन्फर्म, now it will say log it, process to publish, log it, stop here, generate 2 more variants. Basically it is asking me if this image is good or not. I can give it command like say stage it to LinkedIn. So now let's see what happens here. So now it has opened. So as you can see, it is writing down an opinion oriented post from the real data source or real research or whatever is happening in the AI world, and it is also connecting it back to my offerings or whatever I do for, you know, in my agency, like as an offerings and AI audit हो गया, कंसल्टेशन हो गया, टीम ट्रेनिंग वगैरह। तो जो पोस्ट में जो चाहेगा इसको कनेक्ट भी कर देता है सीटी के साथ में। अब ये इसने मुझे पाथ दिया है और यहाँ पे फोल्डर भी खुला है, यहाँ पे नीचे वो इमेज है। आई कैन जस्ट गिव इट द पाथ ओपन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो CR का टैग भी नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, देन इसको एक बार ह्यूमन वेरिफिकेशन करके पोस्ट कर देंगे। तो जो चीज़ पहले मुझे 2-3 घंटा लगता था, वो अभी आप ऐसे देख रहे हो कि कैसे फटाफट हो रहा है। ये रहा पोस्ट। अब इसको यहाँ से शेयर करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे, ये क्लाउड को दे देंगे। क्लाउड कोड के लिए इट विल बी अ डेटा एंट्री की ये वाला पोस्ट है, वो जो अभी बनाया था वो, तो वापस अगर रेफ़र करना है तो कर सकते हैं। कैसा चल रहा है लाइव स्ट्रीम? 26 मिनट्स, नाइस। सो अभी पोस्ट लॉग हो गया है और ये मेरा पब्लिशिंग हो गया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो पूरा लिंक्डइन का ऑटोमेशन है, ये पैकेज करके मैं किसी को ऐसे दे सकता हूँ ना, मतलब कि आई कैन सेल दैट एज एन ऑफरिंग। व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल गो टू ChatGPT, वी विल क्लोज द क्लाउड कोड एंड विल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं पूरा ऐसे बड़बड़ करता जाऊँगा। अपन क्या करने वाले थे, ऑफर कंटेंट सैस से हमको ऑफ़र क्रिएट करना है। किसका ऑफ़र? वर्कशॉप, मास्टर क्लास, कंसल्टेंट, कोचिंग, DFI सर्विस। DFI माने डू फॉर यू सर्विस, डन फॉर यू सर्विस लेट्स से, जिसके अंदर आई विल सेट इट अप फॉर योर अकाउंट वेर यू डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकल डेप्थ। What DFI results will you sell? Leads, content, automation. You will go for content automation and consistency and ease of use. Who is this for? Founders, coaches, agencies, local businesses,
Um, Agencies handles multiple account. Coaches don't have anybody as a team; they can get it done. And founders who wants to post something on their own profile. And local business, I'm not too sure. I have another product for them. Creators के लिए भी अलग एक product है. What will you deliver monthly? Post videos, automation setup strategy, all in one system. Let's say कि we will give for automation setup strategy. ये दो चीज़ें हम करें. What core outcome matters the most? Save time, post consistency, get leads, easier workflow. Fifth, all of above. How much should client still do? Nothing. Approve only, record content, add idea, collaborate weekly. I have built it to be autonomous, but I would prefer people using this as a daily, having a habit building activity to think for what to share and reflections and all. So it's a daily AI content collaborator, not autopilot. What habit should it build? Reflect, capture idea, all four. How long should the daily habit take? How should clients pay? Set up monthly, quarterly, annually, performance based. Let's say I will say one time setup and automation files, so I don't have to wait longer from getting a client to providing them full service. What exactly will the client receive? Automation file, setup guide, training, template. Yeah, all four. What should this one-time DFY package cost? वो हमको रिवाइज करना पड़ेगा. I want it to be scalable, so let's aim for recorded setup video and automation files. So anybody pays for it and they get it immediately. You don't have to wait for me to be available. Recorded setup video and automation files and other collateral recall if needed. Make it simple, direct, easy to relate and honest language. Codex from ChatGPT, another daily assistant of mine. I'll just open up a new chat and say, okay, it is also creating, okay, it is just, I don't know what it is. I guess it is creating the presentation itself, so I don't have to go through the desktop application. Let's wait till it finishes. There is a question, how do we do this for our business? Also, do we need to wait and click for every step to publish? I would recommend interacting with it instead of having just giving one command and letting it do that thing entirely. That way there won't be any human touch or your choices or how you think. Okay, so it has created a presentation deck for me and it has just given me the copy, but I'll just also ask okay अभी ये तुमने दिया है तो डिज़ाइन ही कर ही लो, उतना काम कम. तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अभी उसने ऑफरिंग पूरा बनाया है और इसका अगर ये मुझे PDF बनाए तो किसी को भेजने के लिए अच्छा रहेगा ना. फिर हम लोगों को भेजना चालू कर सकते हैं कि अच्छा सुनो ये वाला चीज़ कुछ ले. We can choose this PDF and it is already cooking something here. But meanwhile, I'll just copy this entire information, open Codex and in my
CC crosslinks folder. Hey, I am working on this. Make a shareable one pager, shareable document, presentation, and make it look good. Don't use blue. And what else? Keep it concise and make it as an offering detailed document. अभी इंफॉर्मेशन दे दिया है, टास्क दे दिया है, अभी ये यहाँ पे करेगा। और चाहिए वाला चैट GPT यहाँ पे कर रहा था, उसने ख़त्म कर लिया है। ओके, गुड। हाँ, मतलब गजब है, बहुत बढ़िया है। इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी इसी को पूछते हैं। प्रेजेंटेशन बन गया, अभी क्या करना है? अब भेजो पेमेंट लिंक, 2 मिनट डेमो एंड फिर 20 मिनट्स को भेजो। ओके, लेट्स स्टॉप हियर, अपडेट memory so it knows we are working on this. So let's say कि this was day 1, जहाँ पे हमने एक जो मेरा ऑटोमेशन है वो बेचने के लिए एक पूरा ऑफरिंग बनाया पहले। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा कंटेंट बनाने का, तो वो तो मेरा ऑटोमेशन खुद बना ही रहा है। तो व्हाट एल्स, सो या आज यहीं पे रोक लेते हैं। अभी जो भी नेक्स्ट स्टेप वगैरह होगा उससे हम कल चालू करेंगे। और अगर बीच में मैं और कोई काम करता हूँ तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा कल तुम्हें। तो आज डे 1 था AI एंड पीयूष का। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कंसिडर AI के साथ जो भी काम होता है वो एक्चुअली कैसे होता है एंड कितना वेट करना पड़ता है, और एक मैसेज में होता है या बहुत सारे मैसेज में होता है। क्या आपको बहुत लंबे मैसेज लिखने चाहिए या छोटे मैसेज लिखने चाहिए, और अगर उसने कुछ बनाया है और उसको अपन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। एंड क्लॉड कोड में पूरा ये वाले कोडेक्स को भी हमने दिया था कि भाई एक प्रेजेंटेशन बना के दे, तो इसने भी बहुत सही प्रेजेंटेशन बना के। तो नाउ आई हैव 2 प्रेजेंटेशन, नाउ आई कैन डू A/B टेस्टिंग ऑल्सो कि कौन सा वाला ज़्यादा कन्वर्ट करता है। तो यस, हम कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी आते हैं हम नॉर्मल वाली स्क्रीन पे। यस, सो whoever watches this video even after the stream ends, I'm doing this every day. Today was day 1, and let's say the goal or the thought behind this is I want to make 10 lakh rupees every month using AI and using whatever I know about AI, or providing education to people or this automation tools. So building in public gives another kind of thrill, and I'm also doing this to know myself more, or let's say find my authentic self, like what it would be if I'm every day practicing this skill to be on camera and doing something and just putting it out with the world without editing it too much. So yeah, if you are new to this particular challenge, then go check out my profile. And if you want this LinkedIn automation thing for your business, then yeah, you can comment down below, DM, I will just message you, or you can drop me a message and we can continue this conversation over there. So yes, where is the event art? Yep, chalo, adios amigos.